Okay, my screen is visible to everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So we were doing vector analysis and we did the definition of limit, continuity, differentiability, and higher order derivatives. Now, length of a space curve. Let the curve C has position vector RT is equal to XTI plus YTJ plus ZTK. Then the length of the curve from T equals A to T equals B is L is equal to from A to B X dash T whole square plus Y dash T whole square plus Z dash T whole square whole की power half dt. Now this is equal to A to B position vector R dash T dot product R dash T power half. यही होगा. डॉट प्रोडक्ट सब जानते हैं क्या होता है. And this is equal to from A to B. Now R dash T की power half is norm of R dash T dt. ठीक. Now similarly उल्टा चलो. एक नोट लिख लो. If ST is from A to T norm of R dash xi dxi, then C can be written as position vector. कैसे निकालेंगे? RS is equal to R of TS. This is equal to X of TS I Y of TS J. This is just the representation जिसको हम लोग कभी आगे यूज करें, तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया. इस पे क्वेश्चन लिख दे. Find the length of the helix traced by RT is equal to A cos T I plus A sin T J plus C T K. A is a positive real number and T lies between 0 to 2 pi.
also express the position vector RT in terms of arc length S. जो ऊपर नोट लिखा है वही चीज. ठीक है, तो उसका सोल्यूशन पहले. लेंथ इज, arc length is 0 to 2 pi a square sin square t. ये दिया हुआ है. तो a स्क्वायर, इसका पहले r डैश t निकालोगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है. तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं. You can find the value of r dash t. This will be minus a sin t. This will be plus a cos and plus c into k. ठीक. So a square sin square t plus a square cos square t plus c square की पावर हाफ dt. कैलकुलेट कर लो. This will be 2 pi under root of a square plus c square. ठीक. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट हम s का रिलेशन t के साथ निकाले एंड देन वी कैन रिप्रेजेंट arc position vector in terms of arc length. So s is 0 to t a square plus c square power half dt. यही है, बस 0 to 2 पाई की जगह 0 to t रख दिया गया है. बाकी यही रखोगे तो a sin square t plus cos square t will be a square. So this is equal to t into a square plus c square. So this means what is the value of s t from here in terms of s? This is a square plus c square. So thus rs is equal to now in place of t you have to put this value s upon a square plus c square. So I am representing in it in the terms of s star I plus a sin s star j plus c s star k, where what is the value of s star? S upon under root a square plus c square. तो ये क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next Ma'am. is हाँ. In order to express in arc length, this method is only the straightforward method. In order to represent in terms of arc length, because this is r is represented as a function of t. So first of all you have to find the relation between s and t. Then only you can represent. Now this whole process is done only to represent r in terms of s. Okay, ma'am. And the procedure is same for all situations. Yes, it will be same for all situations, but this integrand will change, of course, in each case, depending upon the question. Okay, ma'am. So motion of a body or particle on a curve. Right? Suppose that a body or a particle moves along a curve
C whose position vector is RT is equal to XTI plus YTJ plus ZTK. Then the distance traveled by the particle at time t on C is St is equal to A to T norm of R dash xi dxi, जो भी हमने ऊपर निकाला है. ठीक. सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर निकालना हो तो वेलोसिटी वेक्टर vt is equal to r dash t. This is ये आप लोग जानते भी हो, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, x dash t plus y dash tj plus z dash tk. एंड एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, dv by dt. So at this will be r double dash t, this is equal to xt x double dash ti plus y double dash tj plus z double dash tk. Ma'am, Hmm. what is that symbol for the norm of R dash? Some different symbol. ये R- xi है, ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग कहते हैं xi. This is a Greek letter. This is just a variable, you can write any other variable. This is not a symbol, you can write here x, y, z, anything you want. Because x, y, z we are using to represent it in position vector. So therefore I have taken some other symbol so that you can it may not be confused with the position vector. Okay, ma'am. And it should be A to T. That means we are beginning from T equal to A. This is the initial point and this is the final point which will be given because this is at time t. So whatever time is given to you, you will put the upper limit and calculate the distance traveled. So n speed is mod of vt. Velocity vector का mod होगा speed. Write some note on this. If the velocity vector is not equal to 0, then the velocity vector is tangential to the curve of motion of the particle. क्यों? क्योंकि ये r dash t है. You know that if the position vector is rt, then r dash t is the tangent to the curve, to the motion of the particle. And second is st is from a to t. You can write it r dash t है तो r dash t की जगह आप v xi लिख सकते हो. This is the velocity vector. ठीक. Now write the question on this. The position vector
of a moving particle is given by RT is equal to T cube I plus Tj plus T square K. Determine the velocity, speed, and acceleration of the particle in the direction of motion. ठीक है, तो ये कर लोगे सब अपने आप से. वेलोसिटी क्या हो जाएगी? r डैश t, दिस इज 3t स्क्वायर i प्लस j प्लस 2tk. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 6ti प्लस 2k and speed is mod of vt under root of 9t की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1. Now comes gradient of a scalar field. Now for this we need the del vector. This is I del by del x plus j del by del y plus k del by del z. This is defined as the del vector. Now gradient of a scalar field f x y z is del f or grad f. We write it as this. This is equal to del f. This is I del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z. Clear? This is the definition. So like we have to find the gradient of, question is find the gradient of fxy is equal to y square minus 4yx at 1 2. तो solution क्या होगा? fxy this is equal to I del by del x of y square minus 4xy plus j del by del y of y square minus 4xy plus k del by del z of y square minus 4y. So we get 4yi plus 2y minus 4x j. See? Clear to everybody? Yes, ma'am. Now what is the geometrical representation of a gradient? So
right? Geometrical representation 4y j I कैप होगी मैम। और y I कैप होगा ना। माइनस Right. 4y हाँ मैम, माइनस सही तो मैम -4y। अब ठीक है। yes. यस मैम। Yes, ma'am. yes ma'am. Geometrical representation of gradient. Now, what does the gradient represent, right? Consider a smooth curve C on the surface f x y z is equal to 0, passing to a point P. Let x is a function of t, y is a function of t, and z is also a function of t. This we are assuming. Okay. So B, the parametric equation of C. Therefore, position vector of C will be xti plus ytj plus ztk. See, so maybe this I am just illustrating because maybe the parametric equation is given in the question and something is asked, then you cannot say that the position vector is not given. You can find out the position vector using parametric equation. Now let f of p, this is equal to f of some function of x, y, z, be a different scalar field. Be a differentiable scalar field, means that at point P the function is differentiable. Okay? This vector function is differentiable. Now, since the curve lies on the surface, therefore f of xt this curve will satisfy the equation of the surface. So f of yt, f of zt, this is equal to क्या माना था हमने ऊपर, f of x y z is equal to 0, इसको k कर लेते हैं some constant. ठीक, so this is equal to k. So this means del f by, or total differential ले लें, df by dt, this is equal to 0. Now what is the value of df by dt? Using chain rule of differentiation, this will be तीन components में del f by del x into dx by dt plus del f by del y into dy by dt
plus del f by del z into dz by dt. This is equal to 0. Now put all the values. So this will be dx by dt will be or we can write it in the form I del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z. This vector dot product I dx by dt plus j dy by dt plus k dz by dt. लिख सकते हैं. This is equal to 0. The above line is the dot product of these two vectors. Now what are these two vectors? ये दो vectors क्या है ये देख लिया जाए. Now what is the vector in the first bracket? This is the gradient of f. And what is the vector in the second bracket? This is the value of r dash t. Now this is equal to 0. ठीक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने देखा था कि r dash t is the tangent vector and the dot product of the tangent vector and the gradient vector is equal to 0. This means that this gradient vector is perpendicular to the tangent vector. The direction of this gradient vector is in the perpendicular direction to the tangent vector, which is the direction of the normal vector. Clear, everybody? ठीक. And of course, we are supposing that the gradient of f and the value of these two vectors are non-zero vectors at the point P. ठीक. So let at the point P, the gradient is not equal to 0 and r dash t is also not equal to 0 at P. ठीक. Now, what is the value of r dash t? This is tangent vector to C. This we have seen at point P and lies in the tangent plane. To the surface at P. So hence, what is the gradient vector? Gradient vector lies in the normal plane. So hence, this gradient vector at the point P is thus this FP vector Ma'am, are you writing something on the screen? Okay, ma'am, now it's visible. बोलो. No, ma'am, it's already. All right. Chalo. So write one note. Now this is the normal vector. So what will be unit normal vector? मैम स्लाइड पे शो नहीं कर रहा है जो सबको नहीं शो कर रहा.
नो मैम शो हो रहा मैम इससे शो हो रहा है तुम्हारा मैम, कोई लेकिन नहीं स्क्रीन फ्रीज हो गई मैम। मैम एट पॉइंट पी तक हो रहा है। यस मैम, एट पॉइंट पी तक, यस उसके मैम बाद एट नहीं पॉइंट है। टी तक। यस मैम। नोट नहीं लिख के आया। नो मैम। नो नो मैम। मैम। फिर से शेयर कर देते हैं। अब बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रही है हमारी लैपटॉप की? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, तो फर्स्ट नोट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर. What will be the unit normal vector? This will be, now gradient vector is the normal vector. हाँ, सही है। unit normal सही है मैम। vector this. ठीक. Similarly, equation of tangent plane क्या हो जाएगी? At P0 is x minus x0 del f by del x at the point P0 plus y minus y0 del f by del y at the point P0 plus z minus z0 del f by del z at the point P0. This is equal to 0. And angle between two surfaces is angle between their normal vectors. ये सब तो पढ़ा होगा. Angle between two surfaces is equal to angle between their normal vectors n1 and n2. तो ये क्या हो जाएगा? थीटा विल बी cos inverse mod of n1 dot n2 upon mod of n1 mod of n2. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं. Find the unit normal vector and equation of tangent plane to the surface z is equal to under root of x square plus y square at the point 3, 4, 5. मैम क्वेश्चन इज नॉट फिजिकल। मैम Yes, Not ma'am. visible. Now visible. Hmm? now it's okay. So find the unit normal vector and equation of tangent plane to the surface z is equal to x square plus y square at the point 3, 4, 5. तो इक्वेशन पहले तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लो. एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है. z minus under root of x square plus y square. This is equal to 0. This is f of x y z. Now what will be gradient of f? This will be minus x by z I minus y by z j plus k. यही होगा. तो नॉर्मल वेक्टर पहले निकालो at the point 3, 4, 5. Normal vector
at 3, 4, 5, put the value of x, y, z is equal to 3, 4, 5 respectively. So this will be minus 3 by 5 I minus 3 by Yes, ma'am. After gradient vector symbol, nothing. स्लाइड मैम लैग कर रही है. वो आपकी स्क्रीन मैम थोड़ी देर में दिखाई देती so minus 3 by 5 into minus x0, this is 3, minus 4 by 5 into y minus y0, this is 4, and plus del del f by del z वो 1 है, and z minus z0, this is 5, this is equal to 0. तो सॉल्व करने पे हमें मिला 3x plus 4y minus 5z is equal to 0. Ma'am, can you please scroll up a bit? Yes, ma'am. मैम थोड़ा सा मैम मैम थोड़ा सा और sorry. नोट कर लो. Ma'am, मैम मैम स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा वो लिख लिया मैम ये वाला. ma'am, that means all the tangents to the curve at a particular point lie in one fixed plane and the gradient vector is always normal to that plane. हाँ वही तो होगा ना, वही तो हमने प्रूफ किया. किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है. तो टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है? नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर कौन से प्लेन में लाई करेगा? नॉर्मल प्लेन में. And ma'am, at a fixed point, there can exist multiple tangents to the curve, multiple tangent vectors. एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट वेक्टर मिलेंगे? एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट वेक्टर मिलेगा. Yes, ma'am. मल्टीपल कहाँ से मिल गए? Then how are we ascertaining the tangent plane?
टेंजेंट वेक्टर कौन से प्लेन में लाई करेगा? जो टेंजेंट, भाई जिस प्लेन में टेंजेंट लाइन लाई कर रही है उसको हम लोग टेंजेंट वेक्टर कहते हैं. We are saying, we are asserting, we are giving the name. We are naming the plane on which the tangent line lies as tangent plane. That plane is perpendicular to the plane on which our surface is lying. ये तो पढ़ा होगा 3D ज्योमेट्री में, टेंजेंट और नॉर्मल सब. और टेंजेंट प्लेन के जो नॉर्मल प्लेन होगा उसे हम लोग नॉर्मल प्लेन कहेंगे, और उसी नॉर्मल प्लेन में कर रहा होगा. ठीक. Yes, ma'am. Now, There is only one tangent vector. It can be part of many planes, not always a particular one. बट हमें वो ही वाला प्लेन लेना है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. अगर कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है और वो किसी प्लेन में लाई कर रही है तो ऑफ कोर्स दूसरी वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी. जैसे x इज इक्वल टू 0 जिस भी प्लेन में लाई करेगा वो हमेशा y इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक. x इज इक्वल टू 0 को कंटेन करने वाले कितने प्लेन होंगे? वो सब y इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर ही होंगे. जो भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है. ठीक. परपेंडिकुलर होंगे, इतना है बस. नाउ कमिंग टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव. अगेन let fp is equal to fxyz be a differentiable scalar field. Then the directional derivative, now you are finding the derivative of a vector along a direction. Now direction means a vector, a given vector is given and you are finding the derivative in that direction. ठीक, in the direction of that vector. So then the directional derivative of f in the direction of b cap is, direction means a given unit vector is given. The gradient of f dot that unit vector. This is equal to gradient of f dot unit vector. Ma'am, after direction of b cap is nothing is visible. Yes, ma'am. Now it has come. ठीक है, अब हो गया. हो सकता है कुछ नेटवर्क स्लो हो तो थोड़ा देर से आ रहा हो. Now write, find the directional derivative of fxyz is equal to xy square plus 4xyz plus z square at the point 1, 2, 3
in the direction 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. So the function is given. So to find the directional derivative, first we need to find the gradient of that function. So the gradient of the function, this is equal to y square plus 4yz I, जो फंक्शन गिवन है उससे निकाल लो, प्लस 2xy प्लस 4xz j प्लस 4xy प्लस 2z k, यही है। एट द पॉइंट 1 2 3 निकाल लो। So gradient of f at 1 2 3, this is equal to 28i plus 16j plus 14k। xyz की वैल्यू 1 2 3 रख दी। ठीक, अब हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। 3i plus 4j minus 5k। So first we need to find out the unit vector along this vector, because ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, इसका मॉड 1 नहीं आ रहा है। ठीक, तो यूनिट वेक्टर b कैप हमारा क्या हो जाएगा, निकालो। 3i plus 4j minus 5k, और इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, 1/9 स्क्वायर प्लस 16, सॉरी 9 plus 16 plus 25, तो आया 5√2 का अंडर रूट। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 2 3 क्या हुआ, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट b कैप। तो निकाल लो ग्रेडियंट ऑफ f डॉट b कैप डॉट प्रोडक्ट, वेरीफाई करो ये आ रहा है कि नहीं। M 78 by 5√2. Yes, ma'am. 78 by 5√2. ठीक, Ma'am, हम्म, we have to find the magnitude or we have to let it remain as the vector only? यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो पहले चेक करोगे कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। यूनिट होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में गिवन है यूनिट वेक्टर तो नहीं करोगे ये चीज, ये तो अपने आप ही 1 आ जाएगा ना जब मॉड निकालोगे तो। Yes, ma'am. नाउ सम नोट्स, डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड in a direction is its directional derivative. This is the physical representation of directional derivative. Means the definition, physical definition. Now maximum value of directional derivative is mod of gradient f, and it occurs when b is
हैज द डायरेक्शन ऑफ एफ, थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में मॉड ऑफ ए डॉट बी का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज इन द डायरेक्शन, या ये लिख लो, दिस हैज द डायरेक्शन, दिस हैज द डायरेक्शन of del f, that is theta is equal to 0। और b कैप के डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, है ना। ग्रेडियंट या b कैप या ग्रेडियंट ऑफ f की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक। सो which is direction of normal vector। थर्ड, minimum value of directional derivative is minus of mod of gradient f, and it occurs when theta is equal to pi, that is b cap and gradient f have opposite directions। Fourth is a Ma'am. vector field। हाँ, That means this time for minimum value also it is perpendicular to tangent plane but directionally opposite to normal vector. हाँ, डायरेक्शन दोनों b कैप और f का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन कब आएगा, जब थीटा इज इक्वल टू पाई होगा। तो a vector field f is said to be conservative, ये तुम लोग ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, if the vector function can be represented as the gradient of a scalar function f, that is v is gradient of f, ठीक। तो इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। show that, Ma'am, after conservative it is not showing. वेट करो भी दिखा देगा, थोड़ा स्लो है ना। show that the vector field defined by the vector function v is equal to xyz yzi plus xzj plus xyk, this is the value of v, this is conservative, conservative, ठीक। तो हमें क्या दिखाना है कि v को रिप्रेजेंट करना है एज ग्रेडियंट ऑफ f, किसी Can you please ग्रेडियंट scroll up a फंक्शन, bit? The last information. Yes, ma'am. ठीक है। तो हमने मान लिया लेट ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू v, हम ये मान लेते हैं। नाउ अगर हम ऐसा फंक्शन खोज पाए सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देन दिस इज कंजर्वेटिव, और अगर हम फंक्शन नहीं खोज पाए तो दिस विल बी नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, i कैप डेल f बाई डेल x प्लस j कैप
del f by del y plus k cap del f by del z, दिस इज इक्वल टू v, और v हमारा दिया हुआ है ये, ठीक। तो यहाँ से हम i j k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिलेगा, del f by del x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, del f by del y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और del f by del z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग दिस 1 2 3 हमें f की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सम फंक्शन ऑफ y एंड z, ठीक है। किसी को भी कर लो, सपोज हमने फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट कर लिया, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, तो अब जैसे हमने फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट किया तो इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो जो और फिक्स रखा वाई और जेड को, तो जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा वो फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड होगा। सिमिलरली सेकंड वाले को कर लो या थर्ड वाले को कर लो। So here we have integrated first, ठीक, इतना तो क्लियर होगा सबको। तो हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू निकालनी है, दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। तो उसे कैसे निकालें, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक। Now substituting in equation number 2, we get इक्वेशन नंबर 2 में रखो del f by del y की वैल्यू, दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये है, ये दी हुई है, एंड नहीं एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ये दी हुई है, और इसे f को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस डेल जी बाई डेल वाई, so this means that del g by del y is equal to 0, this means that g is independent of y, so this means g is only function of z, ठीक। अगेन आप थर्ड वाली इक्वेशन में रख दो तो तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें, तो सब्स्टिट्यूटिंग ओके मैम। in 3 we get del f by del z की क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, दिस इज गिवन, और जो हमें मिली है f की वैल्यू उसे वॉइस नहीं आ रही मैम। so this means वॉइस क्यों नहीं, वॉइस नहीं आ रही है, योर वॉइस ब्रेकिंग मैम। यस मैम, No, मेरे ma'am. को भी नहीं आ रही पूरी अच्छे से। मैम ब्रेक हो मैम लैग हो रही है। मैम नेक्स्ट क्लास योर वॉइस इज लैग हो रही लैगिंग है, मैम। क्लास दी है मैम। ठीक है चलो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, लीव Thank you, कर दो, ma'am. हम बस लिखे दे रहे हैं इसे, z स्क्वायर प्लस कांस्टेंट k, दिस इज द वैल्यू ऑफ f, ठीक। तो नाउ व्हाट यू हैव डन, नहीं दिख रहा है। हम भेजे दे रहे हैं, सब दिख जाएगा, पढ़ लेना, अगर कुछ ना क्लियर हो तो नेक्स्ट टाइम में पूछ लेना। Ma'am, that means it Okay, is ma'am. not conservative. This is conservative because you have found out the value of f, ऐसे आपने फाइंड आउट कर ली such that v is equal to gradient of f।
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.